Dear students, we are dealing with 5 kingdom system of classification. We have discussed kingdom Monera. Today we will discuss kingdom Protista, and you know that this 5 kingdom system of classification was given by R.H. Whitaker. According to him, all organisms were divided into 5 kingdoms: kingdom Monera, Protista, fungi, plantae and animalia. Today we are talking about this kingdom Protista, and the kingdom Protista includes organisms which are single-celled as well as eukaryotes. You know, the difference between Monera and Protista is very particular. That is, in case of kingdom Monera, all the organisms were prokaryotic. They have prokaryotic cell, but on the other hand, this kingdom Protista includes single-celled eukaryotes. Means all the 4 kingdoms, that is kingdom Protista, fungi, plantae and animalia, have eukaryotes. Or you can say the organisms of these kingdoms have eukaryotic cell, but in case of Protista, the only difference is all the 3, fungi, plantae and animalia, they are multicellular, while these Protistans are eukaryotes as well as single cell. So this is the particular feature of this Protista kingdom, that is, these are single celled eukaryotes are included in this kingdom. Now the boundaries are not very clear. For one person, or you can say one biologist, a photosynthetic Protista may be included in the plant for one, and in the kingdom Protista for the other. So therefore you can say the boundaries of this kingdom, they are not well defined. And these Protista, this kingdom includes Chrysophytes, Dinoflagellates, Euglenoids, slime molds and protozoans. Now today we will discuss only Chrysophytes as well as Dinoflagellates. Now what are Chrysophytes? This is a group of kingdom Protista, and it includes diatoms as well as desmids. Now what are desmids? These desmids are also called as golden algae. You can say that under Chrysophytes, diatoms and desmids are there, and these desmids are golden algae. Now for their habitat, they may live in fresh water as well as in marine water. Fresh water का मतलब होता है कि जिसमें salt नहीं होता, और marine का मतलब होता है salty water, sea water जिसे हम कहते हैं. तो sea water में अगर होंगे, sea में अगर होंगे, then they are marine, और अगर इसके अलावा river में होंगे, pond में होंगे, then they are freshwater Chrysophytes. So you can say that these Chrysophytes may live in fresh water, yeah, they may be found in fresh water or in the marine water. Now the next important is these Chrysophytes are microscopic, that you can observe them only with the help of the microscope. They are not visible to the naked eye, as well as they are plankton. Now this is a new term for you. Now what are planktons? Planktons are those which flow passively. Now there are 2 types of flow. One is you can say actively as well as passively. What do you mean by passively? Passively means with the help of some assistance. Assistant may be water current. In case of aquatic animals, it is water current, that they can move, but only with the flow of this water current. They cannot move their themselves, that they require the help of this water. That's why these are called as plankton. If we talk about other organisms which are actively and they can move by themselves, they are called as nectons. Now these are plankton. Plankton means they can float, but only passively, that with the current of the water. Now most of them, they are photosynthetic. Photosynthetic, you know, photosynthetic, that they have chlorophyll like other green plants, and they are capable of synthesizing their own food. That's why these are photosynthetic autotrophs, and their cell wall has 2 thin overlapping cells which fit into one another like a soap box. आपको पता है कि जैसे सोप बॉक्स होता है, तो उस तरह से जो इसकी सेल्स होती है वो एक दूसरे में फिट होती है. और कितनी सेल वॉल्स होती है? इसमें 2 सेल वॉल्स होती है. और ये जो सेल वॉल्स होती है,
इनके ऊपर सिलिका की डिपोजिशन होती है, और सिलिका की डिपोजिशन की वजह से या दे हैव एम्बेडेड विद सिलिका, और उस वजह से दे आर इंडिस्ट्रक्टिबल, मतलब वो डिस्ट्रक्ट नहीं होती आसानी से। और क्या होता है, जिस हैबिटेट में वो रहते हैं वहां पर मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद क्या होती है, उनकी जो सेल वॉल्स है वो रह जाती है, वहां पे वो एक्युमुलेट हो जाती है, और इस चीज को बोला जाता है डाई एटमेसियस अर्थ। तो इसका मतलब है कि इनकी जो सेल वॉल्स होती है दे आर इंडिस्ट्रक्टिबल। व्हाई दे आर इंडिस्ट्रक्टिबल? बिकॉज दे आर एम्बेडेड विद सिलिका, एंड व्हेन दे आर कलेक्टेड ओवर ईयर्स एंड ईयर दे फॉर्म डाई एटमेसियस अर्थ, and that collection is called a diatomaceous. And you can say, and this soil is somewhat gritty, hence you can use them in polishing, or you can say filtration of oils as well as syrups. And the one important thing is very clear that these are the chief producers of oceans. ओशन का मतलब हुआ कि ये अगर ओशन में सबसे ज्यादा कोई चीज बनाते हैं, प्रोड्यूसर का काम करते हैं, तो सबसे ज्यादा कौन से करते हैं? क्राइजोफाइट्स करते हैं। तो ये हमारे पास एक कैटेगरी थी, एक ग्रुप था किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर, जिसमें हमने बात की क्राइजोफाइट्स की। और क्राइजोफाइट्स में आते हैं डाइटम्स एंड डेस्मिड्स। डेस्मिड्स को आपको पता है गोल्डन एल्गी भी बोला जाता है, वो फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, मेरीन में भी रह सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, प्लैंकटन होते हैं, मतलब दे मूव with the help of water current, and most of them they are photosynthetic, and their cell wall form two thin overlapping cells which fit like a soap box, and the cells are indestructible as they are embedded with silica. And you can say their accumulation of their cell walls in the habitat is called as diatomaceous earth, and being gritty, this soil can be used in polishing and filtration of syrups, etc. And these are the chief producers of oceans, or you can say these are the chief producers in the oceans. जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप बताइए, जैसे आपको ये ऑप्शन दे दिए, क्राइजोफाइट्स दे दिए, डाइनोफ्लैजिलेट्स दे दिए, यूग्लिनोइड्स दे दिए, स्लिम मोल्ड दे दिए, और पूछा कि इनमें से चीफ प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं ओशंस में, तो आप आसानी से वहां पे आंसर कर सकते हैं कि क्राइजोफाइट्स होते हैं। या आपसे पूछा गया कि डाइएटमेसियस अर्थ कौन से बनाते हैं, देन अगेन द आंसर इज Chrysophytes. Now lastly we will talk about the Dinoflagellates. अब यहाँ पे नाम से भी पता लग रहा है कि डाई मतलब टू होता है, तो डाइनोफ्लैजिलेट बेसिकली क्या होते हैं? दीज आर प्रोटिस्टन्स हैविंग टू फ्लैजेला। अगर हम जैसे एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर बनाएं, ऐसे बनाएं, ये हमने बनाया, तो इनमें क्या होगा? इनमें दो फ्लैजेला होंगे। कैसे होंगे दो फ्लैजेला? व्हिप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे एक फ्लैजेला ऐसे ट्रांसवर्स होगा और एक फ्लैजेला ऐसे, तो इनमें क्या होते हैं? दो फ्लैजेला होते हैं, एक ट्रांसवर्स होता है और दूसरा कौन सा होता है? लॉन्गिट्यूडिनल होता है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज डाइनोफ्लैजिलेट्स, दैट दे हैव टू फ्लैजेला, एंड दीज आर मेरीन। मेरीन का मतलब होता है कि ये सी वाटर में होते हैं, एंड फोटोसिंथेटिक होते हैं, और इनका जो कलर होता है वो वेरिएबल होता है। जैसे कुछ येलो होते हैं, कुछ ग्रीन होते हैं, कुछ ब्राउन होते हैं, पर कलर डिपेंड करता है कि उनके अंदर कौन सा पिगमेंट है, उनकी सेल्स के अंदर कौन सा पिगमेंट है, और उसकी वजह से उनका कलर नजर आता है। अब इनकी जो सेल वॉल है, इनकी सेल वॉल में होती है, जो उनका आउटर सरफेस होता है सेल वॉल का, उसमें होती है सेलुलोज की प्लेट्स। सेलुलोज आपको पता है कि ये कार्बोहाइड्रेट होता है, तो इस सेलुलोज की प्लेट होती है उनके सेल वॉल के आउटर सरफेस में। और मैंने बात पहले भी आपके साथ की कि फ्लैजेला इनमें दो होंगे, और वो कहां पे होंगे? जो फरो होंगे, फरो का मतलब इनके बीच में जो गैप होंगे, इन फरो बिटवीन दिस वॉल प्लेट्स। जैसे वॉल प्लेट्स है, तो इनके बीच में एक जो होगा वो ट्रांसवर्स होगा, और दूसरा कौन से वाला होगा? हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल होगा। अब क्या होता है कि इनमें से जो रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, जैसे हम एक एग्जांपल की बात करने जा रहे हैं, दिस इज गोनियोलेक्स। ये क्या होता है? इसकी जो एबंडेंस में ये मल्टीप्लाई करता है बहुत रैपिडली, और उस वजह से वो समुद्र जो है, वो सी जो है, वो लाल नजर आता है। हेंस इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड टाइड। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रेड टाइड किसकी वजह से होगी, तो आप बता सकते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स। और डाइनोफ्लैजिलेट्स में भी अगर आपसे पूछा जाए कि किस डाइनोफ्लैजिलेट्स की वजह से होती है, तो बाय द रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस गोनियोलेक्स। अब अगर हम बात करें
कि जैसे जब इनकी एबंडेंस में ग्रोथ होती है, एबंडेंस में मल्टीप्लिकेशन होती है, तो क्या होता है, ये टॉक्सिन भी रिलीज करते हैं। टॉक्सिन मतलब एक किस्म के जहर, पॉइजन रिलीज करते हैं, और उन पॉइजन की वजह से जो एक्वेटिक लाइफ होती है, जैसे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, फिश वगैरह होती हैं, उनको क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं, उनको ये किल कर सकते हैं। और इसमें जैसे डाइनोफ्लैजेलेट्स की जब हम बात करते हैं, तो इसमें गोनियोलेक्स मैंने आपको बता दिया, एलेक्जेंड्रियम हो गए, देयर आर डिफरेंट kinds of dinoflagellates. Different examples are there, and we have discussed Goniolax as well as Alexandrium. There is another, that is Gymnodinium is there, Lingulodinium is there. There are number of dinoflagellates which can be included in this category. Now today we will just repeat this topic, that we have studied kingdom Protista, and the protistans are those which are single celled as well as these are eukaryotes, and these the boundaries of their classification is not well defined. Some may say them as a protestan, photosynthetic protestan, or other may call them as a plant, but they include these you can say 5 groups, and out of these 5 groups we have discussed only 2 groups, that is Chrysophytes and Dinoflagellates. In next video we will discuss euglenoids, slimodes and protozoans, and Chrysophytes are those which include diatoms as well as desmids, and you know that they form diatomaceous earth, and these are plankton and photosynthetic, and they have cell wall form 2 thin overlapping cells which fit like a soap box. On the other hand, these dinoflagellates, they are marine, photosynthetic, and their color depends upon the abundance of the pigment present in their cells, and they have 2 flagella. One is longitudinal and the other one is transverse. That's why they are called as dinoflagellates. And out of these, this Goniolax, that when it multiplies rapidly, it gives a red appearance to the sea, and that is called as red tide. And they may release toxins which are highly toxic to the marine animals like fishes. Thank you very much.